तो हेलो गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। नई लेसन लेके आ गए हैं। आज हम जोंगली की स्टोरी क्वेस्ट करेंगे पूरी, तो मज़ा आएगा। सारे एक्ट करेंगे, 2 एक्ट हैं तो सारे एक्ट करेंगे, तो ज्वाइन करो, साथ में देखेंगे, मज़ा आएगा, जिसका तुम लोगों का वेट था बहुत टाइम से। सो हियर वी गो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, नए हो तो, और चैट करते रहो। चैट में बताओ मुझे हाई लिख के कि कौन है, कौन ज्वाइंड है स्ट्रीम में। हेलो सैलेंट गेमिंग। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, अच्छा आज मैं ऊपर आसमान नीचे गाना गा रहे हो। हेलो हेलो सैलेंट गेमिंग, वेलकम टू द स्ट्रीम। ये क्या हुआ था, एक मिनट। मैं एकदम बढ़िया। चलो अच्छी बात है, तुम बढ़िया हो। चलो जॉर्ज शुरू करें के जोंगली की स्टोरी को। जो प्रीमियम कमांड है उसका अमाउंट कम कर दिया, क्योंकि आज जोंगली की स्टोरी को है। मैं भी बढ़िया हूँ, अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो। कर दो। क्या कर दूँ, क्या कर दूँ ऐसा? क्या बोल रहे हो? अच्छी चीज़ें मत बोलो। रिडीम यूज़ करूँ क्या? हाँ करो करो, किसने मना किया? मना किसने किया है? पहले साइलेंट उसे तो आने दो, स्ट्रीम लैब को, तब देखते हैं। स्ट्रीम लैब को देखने। हाँ स्ट्रीम लैब आ चुका है, तो मुझे बता देना कब यूज़ करोगे, तब मैं अलर्ट बॉक्स सामने ले आऊँगा। ये लोग हैं। चलो चलो ल्यूए में, ल्यूए हार्बर में, ल्यूए। हाय अंशिका टू, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हुआ नहीं? और तुमने क्या लिखा है कमांड में? प्रीमियम नहीं है, रेडियो उसका नाम बदल गया है। उसका नाम जोंगली रख दिया मैंने। उसने सही लिखा था पहले, उसने सही लिखा था पर उसने स्पेलिंग गलत लिखी है। जॉर्ज तुमने स्पेलिंग गलत लिखी है। नहीं जोंगली नहीं है, मेरा तो यहाँ होना चाहिए उसे। हाँ ये है, बस आ जाए। I will have order. I will have order. I will have order. और कोई कमांड है यूज़ करनी है, या फिर मैं शुरू करूँ स्टोरी को जोंगली की? चलो अच्छी बात है अंशिका टू, तुम ठीक हो। आई विल हैव ऑर्डर, मुझे नाश्ता खिलाओ, मेरे पास ऑर्डर है। क्या हिस्टोरिया एंटीक्वा चैप्टर एक्ट 1, ये नाम है इसका। चलो ढूंढ, यही है, एक ही है। It's time to go. चलो चले चलो चले। अरे इधर जाना है, ये कौन सी जगह है? इधर कैसे जाऊंगा मैं?
व्हाट द हैक। क्या करे, बोला है तो जाना ही पड़ेगा। कहाँ है आया का? पहुँचा हूँ मैं जल्दी लोकेशन पे। और बताओ तुम सब कैसे चल रहा है, तुम सबका पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? जब तक हम लोकेशन पे पहुँचे तब तक बताओ। अरे ये बंदा क्या कर रहा है, यहीं से लात मार दूँ क्या? बारिश हो रही है? नहीं हो रही। हाँ बारिश थोड़ी बहुत हो रही है पर अभी नहीं हो रही। चलो शिप के ऊपर से जा सकता हूँ क्या मैं? ट्राई करते हैं, ऊपर से चढ़ के सीधा उस शिप पे जाना है मैं। अरे 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 सब कुछ बढ़िया, नाइस। मार दो, किसे मारूं? किसे मारूं मैं? अच्छा समझ गया, मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो। समझ गया मैं, अच्छे से नहीं दिखाने तुम लोगों को। अय्या का अय्या का अय्या का नहीं गिना नहीं है, अय्या का गिना नहीं है बस। नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते। बता कमांड यूज़ करते रहो, अच्छा लगता है कमांड यूज़ करते हो तुम लोग तो। चलो चलो अय्या का। हाँ तो हमें जाना है उधर उस शिप पे। तो ज़ोंगली A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their अरे तुम gems. सब मिलोगे, अभी इससे ही मिलोगे, टेंशन ना लो। गाना मस्त है, अफसोस आएगा। आई एम नॉट सच बाय द वे। ओके लेट्स गो टू दैट शिप। अरे कूद आया का, कूदना है। 1 मिनट रुक जाओ गाइस, पहले मैं उस शिप पे पहुंच जाऊं तब करेंगे, तब मैं अलर्ट बॉक्स ऑन करूंगा। नी मनी 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 मनी। अरे मैं उड़ते उड़ते पहुंच गया ना, वरना पहुंच नहीं पाते इस पे। तो यहाँ में ज़ोंगली मिलेंगे। मीट ज़ोंगली, मिल गए ज़ोंगली। स्टोरी टाइम माइको। Oh, I didn't think I would see you here. कायदा भी स्टोरी टाइम है, 1 मिनट के लिए कमांड रोक दो। स्टोरी टाइम। Are these two your friends? Yes, we had the fortune of meeting not too long ago. They are quite a knowledgeable and talented pair, and a pleasure to be around. Delighted to make your acquaintance. अभी आवाज ही से एंजॉय करो। Traveler, we were just discussing the history of Rex Lapis. Would you like to listen? This, good sir, seems not to appreciate the almighty power of the Lord of Geo. As a professional archaeologist, I'm inclined to correct some of his erroneous views. We are discussing the whereabouts of the first Mora. The first Mora? As everyone knows, the Lord of Geo taught the ancient people of Liye the craft of smelting, creating goods that allowed them to develop trade with the early nations of that time. स्टोरी ध्यान दे लो सब। हाँ स्टोरी पे ध्यान दो, मज़ा आएगा। इस वाली स्टोरी को सब ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आएगा। Today, Liye holds the sole right to cast Mora in the entire continent of Tivat. The world's very first Mora should have been cast by the hands of the Lord of Geo himself thousands of years ago.
According to my research, as well as my own hypothesis, I believe that this coin of unique historical significance has been passed down secretly through the years as a kind of token. For example, perhaps the Qixing who control the liye use it in some kind of unknown ceremony they hold when they come to power. Oh, no. My research indicates that the first Mora coin is not such a simple thing. Mora is a catalyst. This we all know. Even today, Mora is used in the mystic arts for its curious properties of weapon enhancement. The world's first Mora would no doubt possess the strongest power. My next historical treatise will boldly expound on the newest findings from my intense decade-long research. That is, that the Lord of Geo used this original Mora as a catalyst to enhance a dagger and a sword. A dagger and a sword? Well, buy the book when it comes out to read the full story. For now, I will only reveal this. The one who finds the dagger shall become supreme in Liyue, and the one who finds the sword may be crowned Liyue's sovereign. I can't say I agree. Let us not speak of the authenticity of the dagger and sword first. But Mora and money came about simply because they are a convenient measure of a contract's value. Rex Lapis just meant for Mora to serve as a catalyst for people to exchange and trade. The world's first Mora is probably just an ordinary coin created by Rex Lapis. As for its fate, the same as all Mora, I suspect. It was simply spent somewhere. I think that Mr. Hanshua's hypothesis seems reasonable. Mr. Zhongli's argument, on the other hand, lacks any evidence. How can you so easily dismiss the Lord of Geo's profound foresight? No, I am not debating right or wrong. I am simply stating a fact. Enough! Do you think you understand the Lord of Geo more than me? I know but little about history, and I wouldn't dare to brag. But discussion is meaningless if everyone has the same opinion, no? Well then, answer me this. Long ago, when Liyue Harbor was being constructed, the Lord of Geo taught the people how to build houses. The model home he used to teach them was completely cast from Mora, correct? That is correct, indeed. Okay, then tell me. Why would the Lord of Geo do something so extravagant if not because of the mystical power that Mora contains? There's a simple explanation, really. To the god of wealth and commerce, what material is easier to get than Mora? I mean, I am talking about Rex Lapis. Excuse me, sir. I have some questions about archaeology. Can we find somewhere quiet to chat? I mean, if it's okay with you. Oh, it's no problem at all. But may my friend accompany us? Perhaps they could be of some help. Of course. They can come if that's what pleases you, sir. Let's go. तो यहाँ पे हिस्ट्री की बातें हो रही है थोड़ी देर बाद की कि फर्स्ट करेंसी कैसे आई थी मोरा जो करेंसी है। तो देखते हैं, पर्सनल चैटिंग होगी अब। लेट्स गो टू सी द पर्सनल चैटिंग। अरे This is Dead. fine wine indeed. चले पर्सनल टॉक्स। What I'm about to say is a bit disrespectful of the Lord of Geo and would draw a lot of angry looks. So it's best to discuss this somewhere quiet. Your argument just now exhibited acuteness of speech and thought. Most importantly, you don't fall for the boasting and acting of the others. You remain objective. So I have a question for you. Perhaps you will answer differently from other scholars. Do you think that all the gods that the Geo Archon killed were evil?
Let's not analyze it in terms of good versus evil. Rex Lapis placed great importance on the integrity of contracts. So any gods he killed certainly must have broken some kind of contract. Right! The Lord of Geo wouldn't kill the innocent. But when I was doing some research, I learned about the legend of the god of salt. The god of salt, Havria, was a very kind god, but she encountered Morax one day in battle. Morax used a rather underhanded trick to assassinate her. What? No way! This bit of history is a long story. But you may not like the truth when you hear it. Don't worry, please tell me what you know. This event, I've already searched for answers for a long time. ओहो गॉड ऑफ सॉल्ट भी है यहाँ पे गॉड ऑफ सॉल्ट नमक का गॉड देखते हैं. Quite so. I don't know where to begin. Over here, Mr. Zhongli. I've been looking for you. So you're over here all this time. Put down your weapon and stay back. Otherwise, Paimon's reporting you to the Millilith. First of all, I'm not holding a weapon. There's no need to overreact now. I'm simply an archaeological researcher from Snezhnaya. I'm not here for trouble. The Fatui say that every time. But this time, I registered with the Liye Ministry of Civil Affairs. I could show you the official documentation if you want to see it. I will be conducting an archaeological survey here, the results of which will all be shared with the ministry. I heard that Wangsheng Funeral Parlor had a consultant named Zhongli with immense knowledge of ancient history and archaeology. So I paid Wangsheng Funeral Parlor a handsome amount to hire Zhongli as my own consultant while I'm in town. So you mean to say that this is work for the Wangsheng Funeral Parlor, yes? Well, since it's work, I don't have a choice. A consultant of the Wangsheng Funeral Parlor must respect their duty. Of course you would be such a reasonable man. Well then, let's head out now, shall we? Wait, if you are studying archaeology, can I go too? I am also a scholar in this field, so I can help. That will give us a chance to continue the topic we were just discussing. Oh, and you should tag along too. This experience may be of help to you on your future adventures. It is a story from before the rise of the Seven. Although the god of salt has already perished, it will still be a meaningful experience for your journey. Wait. This is an archaeological expedition, not a tour group. That's too many people. But this friend of mine has a treasure-finding talent, surpassed by no one. It will surely be of great help to us. Oh? What talent? If my friend espies a treasure chest, they will absolutely find a way to open it. Hey, Paimon's good at that too! Well, that is quite enticing. All right, then. Well, let's go. There's no time to waste. When the Overlord of the Vortex was crushed by the Jade Chamber recently, perhaps something of interest was washed ashore. An ancient artifact would be good. Traces of ancient activity would be great. But a piece of the god's limb would be even better. Who knows what surprises we may find. नमक का भगवान. हाँ भाई नमक का भगवान है. नहीं क्या लॉस लोल क्या जॉर्ज लॉस 20,000. अरे नमक का गॉड ऑफ पे तो कितने लॉस कर दिया. अच्छा क्या ये आइस चल रहा है. नाइस करो करो आइस. चलो चलो चले. पाइमान आएगी. This is fine wine. Mark my words, vengeance will be mine! Vengeance will be mine. Vengeance will be mine. Gyaan will be mine. So this is a day in the life of a traveler. I'm learning more about you all the time. Okay. करो याद करो 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 कितने मना किया. Hi. हाय कितने हाय This is किया. fine wine. हाय सैलेंट गेम. Fine wine indeed. कैसे हो सैलेंट गेम में. कैसे हमारे प्यारे सैलेंटा
मुझे सबको साइलेंट कर देते हैं। मुझे लगता है मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। I only wish life could be as leisurely as this a little more often. This is fine. How greedy of me. How greedy of me. एक मिनट रुक जाओ, मैं कुछ कर रहा हूँ। हो गया क्या? प्लीज A blade embraces its लॉकर duty, में डाल दिया। as a jeweler Fine cherishes wine their indeed. gems. किसको कहाँ लॉकर में डाल दिया? चीटिंग। अच्छा ओके, लॉकर में डाल दिया। समझ गया, यहाँ पे जाना है। ओ लॉर्ड ऑफ वोटेक्स का सीन है। सिमिलर लॉसिंग माय प्रीमर्स। तुम्हारे प्रीमर्स की लॉस करेगा वो अपने लॉस करेगा ना। स्टोरी टाइम, माइका कमांड। This place looks so ordinary. Can we really find anything valuable here? Huh? Hyman thinks it looks really grand. I don't mean the scenery, but rather that there should be something out of the ordinary. A big battle did just occur and all, and I don't even know where to begin looking here. Gyaan Stone Forest is actually the perfect place to be, if you wish to learn about the gods or the history of the Archon War. Legend has it that Rex Lapis threw spears made of large rock into the sea here, piercing and crushing the overlord of the vortex. After many years of wind erosion, those stone spears have turned into the unique rock formations we see now. These mountains were the Lord of Geo's weapons? What we see now is just the part of them that remains. The stone spears hurled by Rex Lapis all those years ago were much greater, both in number and in size. But due to the different angles they landed at, their large centers of mass, erosion by seawater, and years of gravity, many of them have been completely swallowed by the sea. So besides wind erosion, the initial collapsing of the stone spears also played a big part in the formation of Gyaan Stone Forest. Well, a god able to fight one so powerful as Rex Lapis was certainly very strong in its own right. Indeed. This is where the value lies in research at Gyaan Stone Forest. Most of the objects from that time were lost to the sea. But the gigantic waves created by the overlord of the vortex have given those sunken objects a chance to see the light of day again. So you're saying that if we look carefully, we'll be able to get very, very rich. I mean, rich with archaeological knowledge and historical value, yes? That's all I seek in life. Well, since we brought so many people, I think it would be best to split up and look. Okay then. I will go with my friend here. Although I have a smattering of knowledge in various disciplines, when it comes to archaeology, I can't compete with the expert here. Huh? Me? What's the matter? This is your profession. Why are you so surprised? I get it. I'll escort him then. Okay. If we find anything valuable or rare, let's meet on the shore opposite from here. The ancient god probably left behind lots of elemental marks. Following them should make our search much easier. Well, go ahead then. Use your elemental sight to look for any marks. Time. चेस्ट मिल गई, चेस्ट मिल गई, चेस्ट मिल गई। किधर जाना है और बताओ? आगे जाना है क्या? उसी चेस्ट के लिए जाना है क्या हमें?
लग तो रहा है कोई चेस्ट है। ये डब्बे ऐसे ग्रीन क्यों है एलिमेंटल साइड में? आई लव जिंची 97%। अच्छा तुमने किया क्या लव वाला? एक मिनट रुक जाओ, बेचारे की बात की मौत नहीं है। तो हमें जाना है, इन्हें ही हराना है। Shine down. मुझे भी बहुत पसंद है जिनसे। अरे यार कर दिया। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो। अच्छा वो फंस गया। अरे मैं कैसे मारू इसे? यही मार सकता है। आ जाओ। There is no escape. आइया आइया। क्या करे? Terra smash. अरे अरे मौका दे, कुछ तो मौका दे। हाँ दे दिया। Why are there enemies here? Gyaan Stone Forest is a place where a god was defeated, and its remnants still affect the area to this day. हमें एक चेस्ट मिली है। सैलरी काट दूंगा देख के लॉल। किसकी सैलरी काटने की बात हो रही है? बेचारे के पास वो भी नहीं है नाइट वॉच के बाद। गाना सुना, इसका गाना सुना। अरे यार Take flight. वैसे सामने खड़ा था दो Whirling snow. Bye, have a great time. Thanks for playing with me. मैं जाना किधर है? इधर जाना है ना? हाँ इधर क्या है? Find different क्या? क्या? कौन लड़ रहा है मुझसे? एलिमेंटल साइड यूज करनी है, भागो। Shine down. मुझे तंग करेगा। स्लाइम, अपनी स्लाइमता में रहे, मुझसे स्लाइमता मत ले। हाँ क्या कह रहे? फाइंड डिफरेंट, क्या डिफरेंट होना है? अच्छा एलिमेंटल साइड यूज करनी है। एलिमेंटल साइड अलग ही चमक रही है आज। प्लीज स्टोरी देखो जिचिन, पसंद है तो देखना। हाँ यार इतनी मस्त स्टोरी, इतनी बेस्ट एवर स्टोरी चल रही है। एक बार आर्कन मतलब पास्ट के बारे में पता चल रहा है, एक गॉड की स्टोरी चल रही है। वेंटी की भी चली थी, वैसे तो कोई मजा नहीं आता। Gathering together here. But why? See that object in the center? Perhaps it emits the remnant strength of the god. That would certainly attract them. But the hydromonic monsters... I have a contract. I must put my personal feelings aside. Go ahead. Defeat them and recover the relic. और आ रहे Time for defeat. It's just a stone slab, भागो भागो but भागो its भागो। design is quite unique. This should be enough to garner some information. Let's head back. कहाँ मिलना है? मैं कहाँ मिलना है? तो किस जगह मिलना था इनसे?
Life goes on. हमें ले आ जाओ, बात करो हमसे. Can I tell super search roles? You call yourself bro. a scholar of Right now. archaeology? You can't even recognize this or that. What are you good for? We all have our areas of expertise. I already tried very hard to explain. Oh, stop arguing! What in the world happened? This girl just keeps bragging about how she's an archaeologist, but she doesn't even know anything about the surrounding ruins. I even know more than her. She left me to rely solely on guessing, experience, to find anything valuable to take back. Ugh, what a waste of time. I've just been researching the god of salt, so I'm not familiar with sea relics. Is that so strange? And you kept asking about how much Mora everything is worth. Can the value of relics only be measured in Mora? Isn't measuring their value in Mora the easiest way? This also matches the traditions of Liyue, does it not? Now, calm down. No need to make a fuss. We were able to bring back some intriguing objects. Let's have a look. Oh, what a shame. These objects were indeed washed ashore by the Overlord of the Vortex, but they have nothing to do with the god besides being in the vicinity at the time. This stone slab we found, however, has a mysterious pattern and faint aura of divine power. Perhaps it will be useful for research purposes. Quick, give it to me. At least we didn't come for nothing. The power of the gods, yes! This is good. Oh, but these other objects are certainly worth a little something, right? It should be enough to cover the cost of hiring you. It's all mine. So, it's only valuable for research if there are remnants of divine power on it? Not at all. My quest to uncover the history of the god of salt is because history can tell us about culture and beliefs. But you're just trying to use archaeology to get rich. Nonsense! I'm a professional archaeology researcher from Snezhnaya. I swear, if I'm lying, may the Lord of Geo strike me down. Oh, by the way, you probably don't want to sell that teacup. Oh? Why's that? That's not an ancient teacup. It's part of Ningguang's collection. It must have fallen here along with the Jade Chamber. So unless you want to mess with the Qixing... Ah, I see. What a shame. It was of such high quality, too. See? You do want to sell these objects! But, so what? Why can't I pursue wealth both intellectual and material? Don't be so simple-minded. All right, then. No need to stay here any longer. I'm rather quite intrigued by the God of Salt, too, actually. Let's go to Saltarai next. Go to Saltarai. ओके, Saltarai पे जाना है गॉड उसके बारे में जानने के लिए. हाँ, ये रोल्स मुझे पता है यार, मैंने देखे थे, मुझे याद है. मैंने एक बार खेली थी. शेरेट, डॉक्टर, ब्लैक जैक, पपेटियर, हिप्नोटिस्ट, अर्सनिस्ट, जोकर, विजिलर, बाउंटी हंटर, फैंटम, मेयर, एजेंट, वेटरन, अंडरटेकर, कमेलियन, स्पाई, इंजीनियर, टाइम मास्टर, कॉन्जरर, एक्सेट्रा. ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी टैलेंट है, पर कोई नहीं यार, उसे मन है तो लिखने दो. उसी की चैट है, उसकी क्या, तुम सबकी लाइव चैट है, ये कुछ भी लिखो, पर अच्छी चीज़ें, नॉट गलत चीज़ें. हाय लिचर्स. अरे अरे हाँ ही तो बोला है, तुम तो लड़ने मरने पे आ गए. Rise. There is no escape. मैं नहीं मारूंगा तुम लोगों को, तुम बस शांति से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं तुम्हें मारने की. अरे यार यहाँ भी है. शांति से निकल जाएंगे हम चुपचाप.
I'm losing why? पता नहीं brother. ये कौन सी जगह है? यहाँ तो नहीं है ना कभी? I heard that Salterai was once the home of the god of Salt's people. Therefore, there's sure to be loads of valuable relics nearby. According to legend, the people of the god of Salt, Havria, enjoyed prosperous lives under her protection. But this legend has been around for ages. With the countless scrap collectors and treasure hoarders in the area, there probably aren't many valuable things left here. Oh, good. That's just great. If I knew it was picked this clean before, I wouldn't have come. About that, I know there's a ruin deep in this cave here. It's related to the god of Salt, which is actually how the area originally got its name of Salterai. However, the ruin entrance has been sealed by a mysterious power. Nobody has been able to break the seal. I found a mechanism that seemed to be related to the seal, but when I undid the mechanism, the seal wasn't affected at all. So at the moment, the seal's origin and how to break it are very important topics in my research on the god of Salt. I don't know. There's no concrete evidence. But I'm pretty sure the seal is meant to hide some kind of long-forgotten truth. The god of Salt was a benevolent god, adored by the people, not to mention powerful. She wouldn't have any kind of shameful secrets to hide. So, the one who wants to hide some truth is very possibly her killer, Morax. This doesn't sound like something the Lord of Geo would do, though. Who cares about all that? It sounds like countless treasures of the god of Salt lie within this ruin, just waiting for someone to find them, right? You weren't listening at all, were you? Ugh. Even if there's a mountain of treasures inside, nobody can get in if the seal isn't broken. Ah, but we have the illustrious Mr. Zhongli with us. He looks like he knows just about everything. A little seal shouldn't be any trouble for him. This seal seems to be quite ancient. Even Mr. Zhongli may not know all of its secrets. I may know something about it. What? Over the years, I've heard various rumors with bits of knowledge about seals. Although their references seem rather disorderly, they do in fact contain the secret to breaking seals. Let's go take a look at the mechanism Miss Wanyan just mentioned. Okay, since Mr. Zhongli says so, follow me then. हम गॉड ऑफ सॉल्ट को देखने वाले हैं कुछ ही देर में। रेडी माया का पान मैकेनिज्म, ये क्या? Mark my words, vengeance will be mine! ओके ओके नाइट बॉट, ठीक है। अच्छा तुमने किया है सरेंडर। क्वेश्चन मैकेनिज्म यहाँ पे है, फिर से वापस जाओ। नो मार्क माय वर्ड, वेंजेंस विल बी माइन। हमें व्यंजन नहीं चाहिए, हमें। Here it is. There's some debris scattered here that, when put together, look like they definitely had to do with the god of Salt. ये तो मुझे पता है कैसे करना है। According to the inscription on the side, if one looks from a certain angle, the secret to the mechanism will be revealed. तो मुझे पता है, क्योंकि ये मैंने पहले भी किया है। See that? Although we activated the mechanism, nothing happened to the seal. That's because there's actually another mechanism that must be activated. एक और मैकेनिज्म। Another? Let me lead the way from here. मिल गया। This place seems familiar. Huh, I remember. I think there's some elemental monuments here. So you're saying they're related to all this? When I investigated the seal last time, I had someone with a vision accompany me. But when we lit up all the elemental monuments, nothing happened. That's because you don't just need to activate them at the same time.
but in a certain order as well. Otherwise, the seal will not be broken. The secret to this puzzle is hidden in the legends about the Archon War. Oh, bhai, Archon War. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Zhueyun in the west, Qingce in the north. All desolate and devoid of life. Liyue is vast, yet even one haven is hard to find. हेलो अरे यार मेरा माइक ऑफ था गाइस कोई तुम लिख देना इनमें से कोई स्टार्टिंग से नॉर्थ तक कोई लिखना चैट में लिखना ताकि मैं इसे देख के इसको इसे पजल को पूरा कर सकूं मैं तब से माइक ऑफ करके बोल रहा लॉल कोई लिखना चैट में एक बार इतना ताकि शायद यही आंसर होगा इस पजल का जल्दी लिखो देखते टाइपिंग स्पीड कितनी तेज है दोनों में से वैसे आई दोनों ही हार गए लिखो लिखो कौन लिखेगा टियानशेंग इन द साउथ यांगवांग इन द ईस्ट जेयुन इन द वेस्ट एंड चिंगसी इन द नॉर्थ ये लिखना है क्योंकि ये हट जाएगा ना फिर शायद मैं इसे यूज़ नहीं कर पाऊँगा इस ऑर्डर को आई डोंट नो अरे ये लिखना है मत लिखो मैं लिख देता हाँ चलो तुमने लिख दिया थैंक यू जॉर्ज To the north, to the east. Do the people of Liyue always talk in riddles? I think I've heard this saying before. Certainly you have. And the contents of this saying are also related to the god of salt, to provide a haven for her people, whose lives had been ravaged by the Archon War. This benevolent god searched all across Liyue. At that time, with the chaotic fires of war engulfing the land, even one sliver of peace was a luxury. And that haven she eventually found is right here. Today, it is known as Sal Turai. How sad then. In the end, this peaceful place was destroyed by Morax. ऐसा कुछ नहीं है कुछ तो राज होगा इसके बीच में Bye Talenta, thanks for joining. Okay, enough with these ancient stories. Now that we have the clue, hurry up and break the seal. Whatever happened doesn't matter as long as we can get inside that ruin. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Zhueyun in the west, Qingce in the north. In the south, in the east, take it on a silent. With this clue, you should be able to solve the puzzle. Yep. Maybe. Zhongli की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है हमें तो पहले हमें नॉर्थ में जाना होगा क्या पता एलिमेंटल साइड हेल्प करे हमारी कहाँ है ये रहा ना क्या है कहाँ है Genshin in the south ये
नाम किस तरफ है? चेंग यो ही नाम है। एक यहाँ पे है, इस कॉर्नर में होगा। Inactivity serves no purpose. Shine down. ठीक है, और ये योंग वांग चिंग से तो ये यहाँ पे है। वाई योंग वांग यहाँ नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, इस तरफ। अरे यार तुम क्यों आ रहे हो? चलो निकलो, चल हमें काम करने दो। अरे मैं जम गया। विलेजर डोंट डिस्टर्ब मी। हेल्थ कम कर दी। नीचे की तरफ था ना, आई डोंट लीव। थैंक्स यार, मत लीव करो, अच्छी बात है तुमने लीव नहीं किया। नीचे वाला ढूंढना है, इसके नीचे वाला। यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट होगा, इलेक्ट्रो मॉन्यूमेंट किधर है? ये रहा। ओके, ये भी ओपन हो गया। अरे यार एक मिनट रुक जाओ, मुझे एम्बर को लाना पड़ेगा चेस्ट के लिए। एट द रेडी। तुम दोनों गए थे एक बार, मुझे पता है। वॉचिंग जीरो। एम्बर थैंक्स फॉर बर्निंग। रिटर्न ऑफ चीची। I'm here. चीची हिल कर दो सबको। पहले राइडन को। मैं थोड़ा सा मजाक के लिए क्या किया, शीमला प्रीमोद घटा दिया। Emotional damage. लो, नाइट बॉट को गुस्सा आ गया। अब क्या है? अब कौन सी? आई वॉन्ट टू रिडीम। ओके, यू वॉन्ट टू रिडीम, जस्ट वेट अ मिनट। हमने ये कर लिया। जुयान को ढूंढना है। जुयान ये कहाँ है ये जगह? एक मिनट रुक जाओ बस। चिंग से तो इस तरह भाई। जुयान ये तो रहा। जुयान यही तो है, ये इस तरफ है। इस तरफ नहीं, इस तरफ नहीं है। और कहाँ है मॉन्यूमेंट? एक मिनट रुक जाओ बस, कैलेंडर में बता। ये उस तरफ एक है, इधर है। ये किस तरफ एम कर रहा है हमारा? तो शायद हमसे कोई गलती हो गई है यहाँ पे। देखते पहले इन्हें। ये हो गया। Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Jingze in the north. The directions are the clue. Give it another try. इंटरेस्टिंग। हार गए? हाँ चलो यूज़ करो कमांड। विच कमांड यू वांट टू यूज? ट्राई करो। इंटरेस्टिंग, फिर देखना पड़ेगा। Emotional damage. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. I will have order.
अरे कभी कभी हो जाता है, लैग हो जाता है, थोड़ा सा लैग था, कोई नहीं टेंशन ना लो। जोंगली को बुलाया तुमने? जियो डैडी को बुलाया। सो अब जल्दी से स्टोरी को ख़त्म करें, क्योंकि 2 एक्ट है भाई, बड़ी है ये स्टोरी, फिर से देखना पड़ेगा मुझे। ये इस तरफ एम कर रहा है। उसकी कोशिश तो उसको बुलाएंगे। ये भी शायद सही है। जियो कंपनी का बाबा। तुम्हें क्या लगता है कैसे होगी ये? Shine down. देखो अगर एक मिनट रुको, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक मिनट मुझे वो दोबारा देखना है। वो जो तुमने लिखा था कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये था ना, ठीक है। ऊपर वाल पहला जो है हमें करना है, कहाँ है? अरे खो गया खो गया खो गया, ये रहा, मिल गया मुझे। पहले साउथ पे जाना है हमें। पहले कोई भी चला दो ताकि जो है हो गया। इन्हें बंद करना है, फिर बोलेगा जोंगली जोंगली। Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Jingze in the north. The directions are the clue. Give it another try. ओके, तो पहला साउथ है, साउथ का लिया हमने पहले, फिर ईस्ट। ईस्ट हमारा राइट हैंड होता है लेफ्ट हैंड होता है, बताना ज़रा गाइस। पहले ईस्ट हमारा राइट हैंड होता है लेफ्ट हैंड होता है, मैं भूल गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सैडनेस ओवरलोड। जरा कोई बताएगा? साउथ राइट हैंड में होता है, राइट हैंड में साउथ होता है, मैं भूल गया था। अब वो कहाँ है? वो जो मैं है वो ईस्ट होता है तो राइट हैंड में, ठीक है, राइट हैंड में ईस्ट है ना, तो ये मैंने साउथ का किया है। और अगर मैं बीच में खड़ा हूँ तो राइट हैंड में मेरा यहाँ पे आएगा ये वाला, ठीक है। अब क्या करना है हमें? हमने ईस्ट कर लिया, अब वेस्ट करना है। वेस्ट जो यहाँ पे होता है अपोजिट में, फिर नॉर्थ तो ऊपर आता है, फिर नॉर्थ ही है हमारा, अगर हम सही से देख रहे हैं तो। हो गया! Look! The seal really was broken! Mr. Zhongli is indeed quite remarkable. It was nothing, really. Now, it's time that people learn the hidden truth, lost to time. सही कहा, हमने कर लिया, राइट। तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ ये पजल पूरी हो गई गाइस। चलो राज खुलने वाले हैं, गॉड ऑफ सॉल्ट के राज। लेट मी सी। Before entering the ruin, I have a proposal that will help us prevent the kind of senseless arguing between you two that we saw at Gyaan Forest. Okay. What is it? I propose you two agree upon a contract, stipulating that we alternate who gets claim to each treasure we encounter, with only one object permitted per claim.
To show my sincerity, I won't be taking any treasure. This will just be between you all. Hey! Don't pass an opportunity like this up so easily! I don't agree. I mean, you want me to split the treasure with this amateur archaeologist? No, absolutely not. I don't agree either. He will only defile the precious relics left behind by the god of salt. I can't accept this. Well then, if the contract is not agreed upon, I will no longer serve as your consultant on this expedition. You will have to rely on your own experience to find whatever treasures are hidden in this ruin, as well as traps. Hello, Imanshu, welcome to the stream. कैसे हो? Thanks for joining. You have the audacity to demand this. Okay then. Even half of the treasure in the long-sealed ruin of the God of Salt should be enough to make a fortune. If you want me to agree upon this contract, so be it. I just have one request, Mr. Zhongli. If we discover the truth behind the God of Salt, you must judge it fairly, even if the truth harms Morax's image. Hint, this is the name of Anikisa. Yes, I know who is he. I can accept this arrangement. आज मैंने बहुत सारा स्टोरेज खाली किया है. मैं भी डाउनलोड करता हूँ क्या चीज़. डॉग लॉल. क्या जिंशिन इम्पैक्ट? हिमांशु जिंशिन इम्पैक्ट? Well then, let's go. ग्रेट. बस ये ध्यान रखना कि ये गेम सही भी चलनी चाहिए. अब ये गया. लॉल. गाइस सुनो मेरी बात सुनो तुम लोग. देखो थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा तो थोड़ी देर के लिए तुम नॉर्मल चैटिंग कर लो. कमांड यूज़ करो पर मैं कमांड का वो पूरा एक्टिव नहीं रख सकता क्योंकि ये लैग होने लगती है स्ट्रीम की वजह से. ठीक है तो तब तक के लिए तुम चैटिंग करो. मुझे 10 मिनट लग सकते हैं आने में. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. तब तक तुम लोग एंजॉय करो, बातचीत करो. तब तक के लिए आई एम हियर के. सी यू सून. स्ट्रीम ऑन रहेगी पर हमें दोनों एक्ट निपटाने और आज ही अभी थोड़ी देर में. I wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Delighted to make your acquaintance. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities.
So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems.
So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. I only wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time.
wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. I wish life could be as leisurely as this a little more often. How greedy of me. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Hello guys, मैं वापस A आ blade गया. is like a tea leaf. Only Thanks those who for waiting. sample it many times can appreciate its true qualities. कैसे हो? मज़ा आया बातचीत करके एक दूसरे से. हाय जॉर्ज. हाय सिलेंडर. थैंक्स फॉर वेटिंग. गैम्बल ऑल. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes तो their जिनकी gems. इम्पैक्ट में जो है 2 दिन बीत गए मेरे आने तक में. तो कंटिन्यू करते, जल्दी से कूदते रोइन में. अरे मुझे साइड में भी देखना था, कहीं चेस्ट वगैरह तो नहीं है. हाँ नहीं तो देख ही नहीं पाया. हाँ नहीं तो ये क्या है? कोर लैपिस है.
स्नैपड्रैगन। अरे मैं मोटा नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा नफरत इसी वर्ड से है मुझे कि मैं मोटा। तो मुझे मोटा मत बोलो। क्या हो गया, क्यों परेशान हो तुम? जाने दो ना शांति से। हाँ नहीं तो जाने भी नहीं देते। गंदे स्लाइम, कोई स्लाइम था ही नहीं है इनके अंदर। सबको, आप सबको कौन सी मूवी पसंद है? मुझे तो 3 इडियट, मुझे हॉरर मूवीज पसंद है। मेरे को लगता था फ़ोन छोड़ के गाड़ी में चले गए। अरे यार मैं गाड़ी से बाहर ही गया था काम पे। लेट्स एंटर टू डोमेन। जोंगली मिलेगा हमें। बताओ कोई कमांड वगैरह यूज़ करनी तो मुझे बता दो। What is the most dangerous horror movie that out of 100 people only one can watch? कौन सी मूवी है मुझे बताओ, मैं भी देखूँगा। मुझे हॉरर हाँ करनी है। अरे जोंगली मिल गया। जोंगली क्या फ़ायदा, फिर मिलना कौन सा है? क्वेक हमें शील्ड क्यों नहीं मिलता जोंगली का? Are these statues? No. These are people. Veronica. हाँ यार। एक मिनट। They were probably followers of the god of salt. How did they become this way? What in the world is hidden deep in this ruin? मुझे वेरोनिका देखनी है यार, पर वो स्पेनिश में है। इंग्लिश डब्ड में भी नहीं मिल रही मुझे, वो पता है स्पेनिश में मिल रही है। I will have order. आ गई जोंगली। ये रहा तुम्हारा जोंगली तुम्हारे सामने। हिली चलते हैं यहाँ। Will have order. लो नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों। ये अच्छा था। ऑर्डर वाला मेरे पास। अरे ऊपर नहीं चढ़ सकता। चलो जोंगली प्लेयर राइज। चलिए राइज हो गया। जोंगली के साथ ये रिएक्ट करता है। अगर ये अंशिका 2 है तो हाय, अंशिका 1 है तो नहीं। मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि अंशिका भी मुझसे बात नहीं कर रही, तो मुझे भी उससे कोई बात नहीं। राइज Look at this! It's filled halfway with salt! Vengeance will be mine! Just looks like a fancy salt holder. Seems like the god of salt was a god lacking in treasures. According to my knowledge, it's no ordinary vessel. Although it is only half full, it is also forever half full. That is to say, it is bottomless. What? You're saying that even if I pour the salt out, the amount inside won't change? Exactly. Able to produce endless salt. The god of salt is powerful indeed. Finally, after all that effort, I've found precious treasure. I claim this as mine. I just need to pour the endless salt into 1,000 or 10,000 bags. I can sell it and make a fortune. Hey!
How can you use a relic of the god of salt for such a shallow pursuit? If Mr. Clement wants this salt chalice, then the next object we find will belong to Miss Wanyan, according to the contract agreed upon. Of course, as we agreed. But how can anything be worth more than this rare find? Since we have a contract, it's no use for me to fight with him. Then let's move on, shall we? अरे ज़ॉम्बी की हेल्थ कितना कम है? पहले राइडिंग शो है। ज़ॉम्बी why are you leaving again and again? मुझे भी नहीं पता। अरे जिनशी इम्पैक्ट में इंटरेस्ट नहीं है इसलिए। चलो ज़ॉम्बी, I will have order. I will have order. देख लिया तुम लोगों ने रियल आई विल हैव ऑर्डर। ये क्या है? मॉन्यूमेंट। ज़ॉम्बी का काम नहीं आ रहा। और बीच में वो कमांड आ गई बस। ये क्या स्वॉर्ड? स्वॉर्ड मिली हमें। Just a simple ruler. It doesn't look to be worth anything. मेरी नाम की कमांड पेंडिंग है। अरे यार उस पर अभी काम करेंगे, सोच रहा हूँ अभी। मेरा कंफर्म नहीं है कि मैं उसे करूँगा ऐसा तुम्हारे नाम पे। This, if I remember correctly, this is some kind of measuring tool. Indeed. But the god of salt imbued it with another power. When you stick this ruler in the ground, the surrounding area will become covered in salt, much like a rising tide covers the earth. Oh. The deeper it is stuck in the ground, the more salt will appear. It is essentially a bumper harvest of salt. That's even better than the salt chalice! Well then, according to our contract, the salt ruler goes to Miss Wanyan. Yep. No, unacceptable. I paid for and organized this entire expedition. Why should I get the short end of the stick? And this girl has been useless! Why would she get anything? बेचारा नाइट बॉय। Oh boy, here we go again. So you are saying you want to break the contract? So what if I break it? Now that I've seen how the mechanisms in this ruin work, I no longer need you. अच्छा। Let's not forget who hired who here. Why should I let you make the rules? क्यों? Because you agreed to a contract. रेक्स लैपिस से कांटेक्ट करते और फिर तोड़ते हो वाह। Rex Lapis once said, "Ones who break their contracts shall suffer the wrath of the rock." That is one of your liye gods. I am from Snezhnaya. I will suffer the wrath of the rock. You may find it rather unpleasant. इससे उसकी बात ही पूरी कर दी। अब ऐसे फाइट होगा। Pay your dues. Pay your dues to me. Terra smash. हो गया। ज़ॉम्बी कहाँ गया वो? हाँ, हमला करो। Leaving so soon. I'm not leaving. You are leaving. I will have order. I want. Oh, आजा। Order guide you. Crumble. ये काफी अच्छा बना। You can't run from death. बिल्ड से मतलब
I shall confiscate your treasure as well. You are not worthy to continue any further into the ruin. Leave this place. बेचारा ईडी भी नहीं कर सकता. Oh, darn you! Just you wait. You wait. Some archaeological survey. He could only pretend for so long. Hey, Paimon likes Mora, but Paimon gets Emotional damage. Exact सही टाइम पे जो इमोशनल डैमेज किया पाइमन के लिए. Clement's wrongdoing stemmed from greed, yes. But besides greed, there are many other things that may tempt us to break contracts. When people see the object of their dreams, how many are really able to control their desire and follow the contract? I think we should be honest with each other now. Yep. Huh? Be honest about what? That in truth, not a single member of this archaeological expedition came here for archaeology. Why do you say that? Miss, you lack even the most basic archaeological knowledge and can recognize naught but a few simple relics. However, you are an expert when it comes to anything regarding the god of salt. You aren't interested in archaeology or relics. What you're really interested in is the god of salt. Emotional damage. हो गया इमोशनल डैमेज. मैंने एग्जैक्टली टाइम्स पे किया है. नाइस. I believe those legends about the god of salt that you mentioned on the Pearl Galley are passed down between generations at Yinyuan Hall. Okay, that's enough. Sir, you are indeed a man of great knowledge and talents. I seem to have been right to seek you out once I plucked up my courage. You're right. I'm not a scholar of archaeology. I come from one of the 8 trades under the jurisdiction of the Qising, Yinyuan Hall of the salt industry. Our ancestors were those protected by the god of salt all those years ago, when the Archon War engulfed the land in chaos. Emotional damage. You mention it, the people of Liye very seldom use the name Morax. During the war, Morax assassinated our god out of envy for her power. He left us alone and lost in the world. We hate him! But this is Morax's Liye after all. And its history is written as he wishes. So I seek proof of Morax's guilt. He has blood on his hands and cruelty in his heart. We agreed to a contract that we will face the truth head on, didn't we, Mr. Zhongli? You must judge this history fairly. Correct. Naturally, of course. But I must add, Liye is no longer Morax's Liye. सही कहा. Come with me. All the answers you seek lie ahead. देखते हैं क्या आंसर्स मिलते हैं. मैं भी इंटरेस्टिंग हूँ. बहुत अच्छी स्टोरी है भाई. Emotional damage. इमोशनल डैमेज हो रहा है बेचारे को. इतना इमोशनल डैमेज अच्छा नहीं होता. चैट नहीं पढ़ता कोई. राइस. कौन सी चैट नहीं पढ़ता कोई. सैलरी काट दूंगा. काट दो सैलरी. मैंने तो बोला था पाइमन पेपर खा गया. रास्ते में पेपर खा गया. कौन सा पेपर खा गया. मैंने करीब टाइम से किया. Where do you want to go next? If you'd like to see Emotional damage. आती I है have a जाती few है क्या references. है चैट. अरे यार सॉरी मैं चैट नहीं पढ़ पाया. कोई भी चैट मिस हो ना मुझे तुरंत बता देना. अरे मोरेक्स सर आई वॉन्ट टू सी योर बिल्ड. कि तुम्हें कहते बिल्ड किया गया है गेम में.
ठीक है Osmanthus wine tastes the same as I remember. ठीक है 3 कॉन्स्टिलेशन But where are those who... वोटेक्स वैंग्विशर दे रखा है ओके मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है कॉन्स्टिलेशन का नहीं लेना आर्टिफैक्ट का नोबलेस दे रखा है ओके फेट्रेट देना चाहिए मेरे हिसाब से टैलेंट जो है काफ़ी कर रखा है ओके मैं उधर जाना था हम सीधा आ गए चलो स्टैंड पर जियो क्रम ओह माय गॉड तुम लोगों को फिर से मिलेगा फिर से देखने ये भी मजा है तो मर गए Emotional damage. कौन मर गया हम भी जाएंगे तुम क्यों बाय ना मरेगा ये मरेगा ऐसे ही मरेगा ये गया This is order. Crumble. Terra Smash! Emotional damage. जॉम्बी नहीं मारेगा Right. Crumble. क्रम्बल शील्ड है ऐसे मरेगा ये बाय बाय टेरा स्मैश भी जोंगली जैसा कहता है का This is a sword? टेरा स्मैश भी जोंगली जैसा कहता है का समझ नहीं आया मुझे सही से टेरा स्मैश एक मिनट मुझे याद नहीं करता टेरा स्मैश भी जोंगली जैसा करता है पता नहीं मैंने इतना ध्यान नहीं दिया तुमने ध्यान दिया तो बताओ रिडीमीडी Emotional damage. इतना इमोशनल डैमेज इतना दुख It's a broken sword. This is proof. This proves that the god of salt had to fight back against the evil Morax. But sadly, she was defeated. हाँ मैं आती हूँ जाती हूँ हाय जिसने भी हाय किया बार हाय किसने किया नाइट वॉक ने किया चलो मैं वापस जा रही हूँ जाओ The power of this sword surely is much greater than that of the salt chalice and salt ruler. पता नहीं If we can repair the sword, then we can show the world the mighty power of the god of salt. हाँ उसमें से उसके भी स्क्वायर में निकल रहा था अच्छा वो स्क्वायर कह रहे हो वो स्क्वायर समझ गया जब पता है वो स्क्वायर कब निकलता है जब जोंगली हमारे पास होता है ना और जोंगली का वो ई स्किल यूज़ होता है और जो है ईथर का जो ई स्किल यूज़ होता है तब वो स्क्वायर सा निकलता है तब होता है वो मैंने ये नोटिस किया है अगर जोंगली नहीं होगा पार्टी में तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा स्क्वायर नहीं निकलता It does look like something left behind after being defeated in battle. यानी कि जिनशी पे कितने नंबर पर रैंक करते हो मेरी एडवेंचर रैंक अगर अब पूछ रहे हो तो 55 है अभी भी एडवेंचर रैंक 55 है I will have order. Two pieces of a broken sword.
From an archaeological perspective, these are two separate relics. According to the contract, you can only claim one. Why? We were alternating claims to treasure, true. But Clement is no longer here. Yes. But the only one object per claim clause still holds true. You cannot take two relics at the same time. This logic! Zhongli, she seems like a good person, and no one is fighting over the treasure. How about you let this one slide, huh? When there's a contract, nothing can be allowed to slide. If the contract is not followed, then it is broken. Okay. No! If I only take one half, then it can't be repaired, and the power of the God of Salt cannot be restored. No matter what, I must be faithful to her. Even if it breaks the contract, I don't care. Oh my god, फिर से break होगा. So you are already decided? Then there is a price to pay for breaking the contract. Zhongli! That is to say, you consign yourself to suffer the wrath of the rock. Wrath of the rock. That's okay. The God of Salt gave up her life to protect her people. My sacrifice is nothing compared to Emotional damage! that. Punish me however you want. Just let me take this proof of my faith. No, you can't hit her! Perhaps that punishment would be easier for her. But, as punishment, I will tell you the truth. Oh, क्या punishment है? सच्चाई पता चलेगी. Huh? The truth? You mean the truth is my punishment? Yes. The truth that I am about to tell you shall be your price to pay for breaking the contract. I'm afraid to say that the God of Salt, Havria, was not the powerful god you imagine her to be. Rather, she was a small and weak god who yielded to all other gods. When it came to war, she lost, never able to win a seat among the seven. What? During the Archon War, the gods of this world used all their strength and cunning to vie for control of Tevat. But Havria instead chose to flee. She thought that by giving up before a fight could start, she could save herself and her people from the war. However, during such a long war, there is no end to the advances of aggressors. After making countless concessions, Havria lost all of her lands, until only one small haven remained. No! It can't be so. In her last days, she had not even a single blade to defend her people with. Not even a single blade? Then... this sword... This sword is not a relic belonging to the God of Salt, but is instead the murder weapon used to kill her. Murder weapon? No! That's not true! That can't be true! You're trying to test my faith in the God of Salt! क्या मेरा नहीं है? निकल ये प्रोफाइल पे किसका पिक्चर है? तुम्हारा अंशिका? मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है अंशिका की प्रोफाइल पे मेरी फोटो. As I said before, I only state the facts. Preposterous! You are a follower of Morax! Don't try to trick me! Nope, he is a Morax. He is Morax. Hey! Come back! It is a punishment after all. I did not want to tell her such cruel facts, but the contract was broken. मेरी नहीं है. Let's follow her deeper into the ruin. There, I fear, we will find something that will leave her no choice but to face the truth.
ओके क्या कह रहे हो? अनिकेत लड़की कैसे बन गया? उसके बड़े बड़े बाल हैं, पूरा लड़की जैसा दिख रहा है। मेरे इतने बड़े बाल तो है भी नहीं। ये तुम बोल रहे हो? अच्छा हमें अंदर जाना था ना, तो कैसे जाना है? दे दो हमें। हाँ वो लड़की है। Are these statue thingies running? What will we find ahead? Salt and betrayal. चलो जोंगली हील करो। अच्छा तुम सब मेरा फेस हैक कर सकते हो? वाह क्या एग्जामिन कर लिया एग्जामिन। ये परेशान है बेचारी। यहाँ कुछ है क्या एक्सप्लोर के लिए? वैसे यहाँ कुछ नहीं है, चेस्ट तक नहीं है। एक गंदी बात। देखते क्या होता है। कितना दुख मिला बेचारी को। What are all these? What did they see? What did they do? What happened? Since you do not trust me, let us continue onward. That which lies beyond this door will show you all that happened back then. Emotional damage. Walk to the end, find the truth. मैं गॉड हूँ। अच्छा तुम गॉड हो? क्या पावर है? कौन सी एलिमेंटल पावर है? मुझे बताओ कौन से एलिमेंट को कंट्रोल करती हो तुम? ओ भाई ये हालत तो देखो इस जगह की। क्या हालत देख रहे हो तुम लोग? ये बुक्स हैं। कौन सा एलिमेंट बताओ? कौन सा एलिमेंट है कंट्रोल करते हो तुम? पर आया नहीं इसका नॉम नहीं आया। मेरा जियो है। जियो तो मोरेक्स का है। This is the scene of the crime. Havria's body dissipated, leaving nothing but these traces of salt. Her dying moments have since been frozen in time to this very day. The story continues that some among her people realized at last that this gentle, kind, but weak god could never protect anyone in wartime. The Archon War was cruel in the extreme. Instead of consigning her to the agony of defeat, they thought perhaps it would be better to give her a quick release. But what about these statue thingies? No matter how weak the god, the power that flows forth when they are slain is beyond the strength of mortal coils to bear. Those who could not flee were thus transformed. Those of her people who were untouched by this disaster left for Liye, where they sought refuge with Rex Lapis. Their descendants feared Havria's remnants and lived in terror
that she had laid upon them an eternal curse. So they risked their lives to come here, to break the sword, and offer up obeisances in hopes that her anger might be appeased. I will choose thunder power. वो तो राइडन शोगन की है. राइडन शोगन पे है थंडर पावर. सोलर नहीं थंडर. सोलर पावर. एनिमो है मेरा वेंटी. पूरे ड्रंक पड़े रहोगे पूरे टाइम इधर उधर फैलोगे. वाटर. हाँ हाइड्रो. अभी वाटर गॉड के बारे में हमें पता नहीं हाइड्रो का, तो हाइड्रो तुम बन सकते हो. एनिमो विंड है. अंशिका विंड हवा. But they need not have done so. For how could a god who had never once resisted, even till the end, nurse hatred for her people in her heart? Even if this is so, I can't! This must be a lie. False history, all of it! Don't you dare try to shake my faith! Yikes! Zhongli didn't show any mercy this time either. This is the price she must pay. Yet I would not call it a bad thing. Judging by how she appeared, I fear that she will struggle for a time. But even if she may not escape that struggle immediately, simply recognizing the truth is good enough for now. Indeed, in ages past, Havria's story served as a warning to me as well. Faith in a god who is already emotional damage. So it is for Havria, and so it is for Morax also. All right then. Now, would you like to accompany me in taking a trip to Gyaan Stone Forest? Huh? What do you want to do, Zhongli? Treading old ground, telling old stories. One cannot help but be reminded of old acquaintances. तो ये चैलेंज पूरा हो चुका है हमारा. क्या जॉर्ड मैं ट्रैवलर के एनिमल लूँगा. नाइस, अच्छी बात है. मैं लूँगा ट्रैवलर का जियो. मैं ट्रैवलर के जियो पसंद है मुझे. वैसे अब Emotional damage. डेंड्रो का भी सोच सकते हो. तुम लोगों को गेम वॉइस सही आ रही है ना? वैसे कोई कम ज़्यादा हो रहा हो कुछ? ओ माय गॉड. अंशिका की खुश हो रही है. साइलेंटरी डोंकी इंकी पिंकी पोंकी. ए आएगा तब देखेंगे. अच्छा अंशिका, एज यू आर नॉट टॉकिंग टू मी, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू. अंशिका एक मोंकी क्या डोंकी मत बोलो किसी को. कि कहाँ गया मैं? 1 मिनट रुको. ये किस जगह पे हूँ? ये कौन सी जगह रे? अच्छा ये है. हमें जाना है यहाँ पे. मुझे अजीब तरीके से आवाज़ आ रही है गेम की. तुम्हें भी अच्छी आ रही है क्या?
हो ऊपर चढ़ना है इतनी ऊंचाई पे। Emotional damage. साइलेंटर हो गया, साइलेंटर को इमोशनल डैमेज हो गया। तो ड्रैगन स्पाइन का फ्रॉस्ट नील है, स्काई फ्रॉस्ट नील। डैन ड्यू आएगा, अच्छा लगा तो लेंगे। ओके, नया रीजन आने वाला है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे यार कैसे होगा ये, कैसे कैसे दे रखा है इसने रास्ता, मैं चढ़ूँगा। ये क्या था? यहाँ एक वो है जियोकुलस, ये क्या सीन है भाई? जियोकुलस कैसे आ गया इधर? जियोकुलस तो मैंने सारे ले लिए हैं। लगता है इसके पीछे भी कोई ना कोई स्टोरी होगी कि एक्स्ट्रा जियोकुलस दिया है इनने। ऐसे तो एनिमोकुलस भी होगा एक्स्ट्रा। चढ़ो चढ़ो, क्या क्या था, क्या चीज? चलो आयक्का, चलो चलो। Emotional damage. इमोशनल डैमेज होता है वो है, किसको हुआ है इस बार? पाइमन, ठीक है। जियो सीरियल से मिले ये ना, इधर आया कैसे? जियोकुलस कैसे मिल गया मुझे? Now, I mentioned before that many gods of old have been sealed beneath the Gyaan stone forest. हाँ बोला था। The Adepti have presently handed liye over to mortals, and Havria's time was even further in the past. The Salt Chalice and Salt Ruler that she left behind should not return to liye. To leave them here is to let them slumber. And it is also a homecoming. Homecoming! Spider-Man homecoming! I ended an era with my own two hands. I've always wondered how I should remember that which I ended. एक मिनट रुक जाओ। History records, but history may be changed. This incident proved that. Time is a mighty force, and history's twist in its flow. I need to find a better way of recording history in order to engrave its truth. Emotional damage! Stone carvings were one such ancient method, but unchanging stone, immovable earth, even one such as myself. Someday we may all disappear. Zhongli. Therefore, I thought of you, traveler. मेरा क्या सोचा इसने? You are one who crosses the celestial atlas, and who passes through countless worlds. If our history is engraved in your memory, it will one day accompany you into another world. Okay, ये भी सही बात है. As long as a traveler like you is able to record what happened, then a backup of sorts will exist for times and tides of Tevat. सही कहा. So that's why you wanted us to come with you. So you don't just bring me along to find treasure. Sounds like tough work. Memorize करना. मैं वैसे कौन से हैं एलिमेंट ट्रैवलर के एक भूल रहा हूँ. देखो, एक है एनिमो, एक है जियो, एक है इलेक्ट्रो. अभी तक 3 एलिमेंट ही रिलीज़ हुए हैं गेम में. अब आएगा डेंड्रो एलिमेंट.
ट्रैवलर का डेंड्रो एलिमेंट भी आएगा। Now then, it is time that we consigned both the Salt Chalice and Salt Ruler to the sea. Huh? Why do we need to throw them into the sea? As I said before, this is the place to which the remnants of many bygone gods are consigned. This includes Osial, Overlord of the Vortex, who the Jade Chamber most recently returned to this ocean prison. कटसीन टाइम है शायद इस बार। Thousands of years ago, the Adepti and I fought against the turmoil that plagued every corner of this land. Gyaan Stone Forest, where I sealed many gods with my spears. After so long, naught but folk tales remain. Osial, you and I were foes. But our ancient grudge is but a bygone memory now. May that which Havria has left behind be yours to subsume. And thus another spark of divinity departs from Liye. My legacy shall now be left to those who come after to debate. So guys, Act 1 पूरा हो चुका है। जॉर्ज मजा कैसा लगा Act 1? I will remain here for a while. I fear that moments of reminiscence like this can only grow fewer. Emotional damage! We did not measure right and wrong during the days of the Archon War in the same manner as we do today. Of course, as I am now, I only wish that she could have lived in a gentler time. I will remain here for a while. I fear that moments of reminiscence like this, though the Salt Chalice and Salt Ruler do have power in their own right, they are nothing before Osial. If a day comes when he should recover his strength and return, I believe that even so, he will be defeated once more. फिर हार जाएगा। जॉर्ज बताओ तुम्हारे रिव्यूज फर्स्ट एक्ट में। I want to know your views. I will remain here for a while. That is a good question. In the past, I might have given you a most specific answer. But now... Yes. I suppose I will continue in my role as a consultant at Wangsheng Funeral Parlor. But if this journey was to your liking, why don't you come along the next time I am seeking to preserve memories of Leo's past? Okay. हाँ क्योंकि अरे भाई मस्त है, इतना खतरनाक। चलो अच्छी बात है, खतरनाक अच्छी बात है। माई रिव्यूज Act 1 was like पाइमन का सिर्फ पोपट हुआ। तीसरा बंदा कौन देख रहा है? अच्छा 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 है। चलो फिर Act 2 की तरफ बढ़े क्या? It's time for the Act 2. Unlock. हाँ चलो, पहले एक लिंक कर ले। चाबियाँ कैथरीन से मिलना है हमें। कैथरीन अभी मैं जाता हूँ, बाय। क्यों Act 2 नहीं देखना? Act 2 का तो मुझे याद भी नहीं क्या होता है Act 2 में। 2 घंटे में हमने एक एक्ट निपटा दिया, वो भी थोड़ा पहले हो जाता। पर कोई ना। प्रीमोस देखो। हाँ मेरे प्रीमोस है 1224। अभी ये 1224 से बढ़ जाएंगे।
1300 कुछ हो जाएंगे, 1340 या 50 आज की कुछ। 1 ट्रिलियन स्टार दूंगा एक्ट 1 को। हाँ यार अच्छी है, पर मुझे वो शोगन का ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे लगता है शोगन का ज़्यादा अच्छा है। तो मोरेक का भी मस्त है, पर येलन की स्टोरी कोई बहुत बोरिंग थी, मुझे याद है, नींद आ गई थी मुझे भी, पर एंड में मज़ा आया था। As a matter of fact, there's one that looks perfect for you two. हेलो रैकर, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हो? हम एक्ट 2 करने वाले जोंगली स्टोरी को, इसका अभी एक्ट 1 ख़त्म हुआ है, स्टार्ट हो गया एक्ट 2 वैसे। Uncle Dai is one of the foremen at Huishan Hall over in Liye Harbor. He's hoping the Adventurers Guild can spare some manpower. कौन से वाले में है? आयाका, जहाँ पर चीची है वहाँ है ना? नहीं, उसमें आयाका नहीं है, आयाका का अलग से बैनर आता है, वो निकल चुका है। अब तुम्हें वेट करना होगा कि आयाका का बैनर कब आएगा। दूसरा, मैं भी पुल करूँगा दोबारा आयाका के कॉन्स्टेलेशन के लिए, लास्ट टाइम मुझे मिला नहीं था, मैंने ट्राई किया था। पर जोंगली स्टोरी को शो यहाँ यार मस्त है भाई साहब, टाइम पर आए हो। हाँ बिल्कुल सही टाइम पे आया, एक्ट 2 चालू हो रहा है। What is it we have to do exactly? I believe you'll be looking for workers. Ooh, looking for people? Awesome! We're good at that! I have no reason to doubt your abilities. I'm sure the details can be worked out face to face. If you're willing to accept this commission, head over to the dock and talk to Uncle Dai. एक्ट 2 ज़्यादा अच्छा होगा एक्ट 1 से, मुझे ऐसा लगता है। अंकल डाई से मिलना है हमें। डाई डाई अंकल डाई, डाई किधर अंकल डाई? बहुत सन लोगों को होगा नया। हाँ पता है मुझे, बहुत सन लोगों को होगा। मैं उस बारे में अभी बात नहीं करना चाहता, पर नॉर्मली स्टोरी कंटिन्यू करते देखते हैं। हमें वैसे कुछ पता नहीं स्टोरी का, पर मुझे ये पता कौन सा बहुत अनलॉक होगा। माइट डाई याद आ गया। I am indeed. ये इसके पीछे सिक्का पड़ा हुआ है, ये लेना है हमें। ये पता नहीं क्यों कलेक्ट करना है। मुझे 3 मिल गए हैं या 2 मिले अभी तक। Ah, now then. You must be the adventurers assigned by the guild. Huh? How could you tell? By the clothes on your back and the look on your face. Experienced adventurers at that, I'll wager. Right again! You're pretty perceptive! In this trade, you need a sharp eye for people, not just rocks. Uncle Dai can see what you're made of from a long way off. Alright, my assistant should be arriving soon, so let's just wait here a moment. Woo woo! That's why we're here! Now